कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में घिरते हुए जा रहे हैं। भारत पर लगाए गए ट्रूडो के आरोपों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलवेरे ने कहा कि उन्हें सभी फैक्ट्स के साथ सफाई देनी चाहिए थी। एक मीडिया संबोधन में पोइलवेरे ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई तथ्य नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को सभी तथ्यों के साथ स्पष्ट तौर पर सामने आने की जरूरत है। I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Vast foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that. और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव फिर बढ़ गया है। इस मामले को लेकर कनाडा के हडसन इंस्टीट्यूट में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के रिसर्च फेलो दिनशा मिस्त्री ने कहा है कि भारत कनाडा के बीच तनाव की इस घटना से कई सबक सीखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका भारत संबंधों के लिए चाहते हैं कि ऐसी बात कभी ना हो जिससे कि रिश्ते खराब हों। I think there are several lessons that can be drawn from this, specifically related to the U.S.-India relationship. What is the Canada-India relationship now, right? It's deteriorated over something that didn't necessarily need to deteriorate, right? Obviously, if there was an extrajudicial killing, this is a concern and this shouldn't happen in any country, certainly not in NATO ally. But we should be proactive to prevent something like that from even coming to anybody's minds if that's what happened, right? And that takes an aggressive approach to Khalistani activism. It takes some deep conversations. I really like this idea of sitting down with the Indians and thinking about how we should define terrorism. I think that's a great idea. More collaboration. If we don't do it, we could end up in a situation like what we're seeing right now transpire with Canada, India, or worse. तो जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप की लगातार तमाम तबकों से लगातार इसकी आलोचना हो रही है। इस बीच सिख ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जेसी सिंह का कहना है कि कनाडा के साथ रिश्ते पिछले हफ्ते ही खराब नहीं हुए हैं, ये लंबे समय से खालिस्तानी मुद्दे की वजह से हुए हैं। उन्होंने कनाडा के पीएम पर सवाल किया कि इस मामले में अब तक ट्रूडो कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। The relationships with Canada is not deteriorated just last week. It has been going on. It has been building up because of the Khalistani issue for a long time. I used to think that we are probably overreacting to the Khalistani issue in Canada because they are very small numbers. But it has become what Prime Minister Trudeau said in India after meeting with Prime Minister Modi was a much balanced statement. And I don't know what happened when he got back. If he had the same information back then, why didn't he said that publicly while he was there? I don't know what political games are going on. But right now, I think it's too early. Both countries have kicked out diplomat in tit for tat. और इस चर्चा में माइकल रूबिन ने कहा कि भारत और कनाडा के मसले पर अमेरिका सामने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ट्रूडो के बयान पर कोई भी विवादास्पद कदम नहीं उठाएगा क्योंकि शुरू से ही अमेरिका ऐसा करता रहा है। Sometimes in Washington what isn't said is as important as what is said, and the fact that the United States hasn't come out and affirmed what Justin Trudeau was hinting at, I do think is important. Now, what should the United States do? If Justin Trudeau wants to become an Olympic hole digger, then perhaps the United States' role would be to provide a ladder to help him climb out of it. और वहीं भाजपा के नेता वैजयंत जय पांडा ने कनाडा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपने धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इससे कनाडा में भी अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है। सैकड़ों कनाडाई नागरिकों की हत्या अलगाववाद के पोषण के कारण हुई है। कनाडा में स्वयं क्यूबेक आंदोलन जैसे अलगाववादी आंदोलन हैं। कनाडा सरकार उन लोगों को समान स्वतंत्रता नहीं देती है जो क्यूबेक के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं।
वे क्यूबेक अलगाववादियों के लिए जनमत संग्रह की अनुमति नहीं देते हैं। कनाडा खालिस्तानी अलगाववादियों के हिंसा के कृत्यों का जश्न मनाने की भी अनुमति देता है। ये स्वीकार्य नहीं है, ये सभ्य नहीं है। The tweet was of course done sarcastically, but there is a grain of truth in it. Canada has been professing all these liberal values like freedom of speech, but they have been appeasing and patronizing and supporting terrorists on their soil. And these terrorists, they are not just targeting India. They have killed hundreds of Canadian citizens themselves. Canada itself has separatist movements, such as the Quebec separatist movement. They don't allow the same freedom to those who want to have independence for Quebec. They don't allow a referendum for Quebec separatists, and yet they have no problem allowing Khalistani separatists and terrorists to not only have to try to have this referendum on Canadian soil, but also to celebrate acts of violence. They have had tableaus celebrating the assassination of an Indian Prime Minister. This is not acceptable. It's not civilized. और इस पूरे मामले पर हमारे साथ एक पूर्व राजनयिक अमृत लोगुन जी इस वक्त मौजूद हैं। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया प्राइम में। और जैसा कि हम इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया कि कनाडा और कनाडा के पीएम की आखिर क्या मजबूरी है कि एक संसद में, वहां के संसद में वो इस तरह का बेसलेस, फैक्टलेस बयान देते हैं। अगर, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि अगर ये जो आरोप वो लगा रहे हैं, अगर वो उसको सिद्ध नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान जस्टिन ट्रूडो को झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही नेगेटिव जो घटना, ये जो स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि यदि आप कोई स्टेटमेंट इस तरह के देते हैं और बिना किसी सबूत के, तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, बोल रहे हैं, बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। और अभी तक कोई सबूत नहीं आया, लेकिन उसकी वजह से पहले उन्होंने हमारे एक राजनयिक को बाहर किया, मतलब पर्सनल नॉन ग्रेटा जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं, और भारत को भी उसी तरह से अमृत जी, अभी जी मैं आपको